और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं सैन फ्रांसिस्को, जहां पर गूगल का इवेंट इस वक्त शुरू हो चुका है। गूगल आज 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। सुंदर पिचाई And the shift continues. In fact, when I look ahead at where computing is headed, it's clear to me that we are evolving from a mobile first to an AI first world. What do I mean by that? In this world, computing will be universally available. It'll be there everywhere in the context of a user's daily life. People will be able to interact with it naturally and seamlessly than ever before. And above all else, it will be intelligent. It'll help users in more meaningful ways. At Google, we are very, very excited about this shift, and we've been working for a long time towards this shift. At the heart of these efforts is our goal to build a Google Assistant. We spoke about the Assistant earlier at Google I/O this year. We envision the Assistant as a two-way conversation, a natural dialogue between our users and Google to help them get things done in the real world. The Assistant will be universal. It'll be available when the users need it to help them. And our goal is to build a personal Google for each and every user. Just like we built a Google for everyone, we want to build each user his or her own individual Google. To capture our vision for what the Google Assistant is, we put together a short video, so let's take a look. When we started, we made this for everyone, so that everyone could find anything they need among the millions of bazillions of things in the world. Today, it seems like sometimes it's easy to feel like you need a little help with the stuff just in your own world. Your photos, phone, videos, calendars, messages, friends, trips, reservations, and so on and so on. Wouldn't it be nice if you had some help with all that? Wouldn't it be nice if you had a Google for your world? That's why we're building the Google Assistant. Hi, Amy. How can I help? You just ask it what you need. Okay, Google, what do I have to do today? And your assistant understands and helps you out. You can even carry on a conversation with it. How long will it take to get to downtown Chicago from home? Here you go. What restaurants are there? Book a table at Cortino Restaurant. Sure. And the assistant is always there for you. So if you're on the road, you can ask it where to fill up. And if you're at home, you can ask it to play some music. Or if you're in a chat with a friend, it can show you what's playing tonight. It's like your own personal Google. Naturally, anything you share with it is safe and secure. And the more you use your Google Assistant, the more useful it becomes. Remember, my byte combo is 326. Got it. And soon, you'll be able to access it from all sorts of places, so it will be everywhere you are. We made this for everyone. And today, we're making this just for you. Hi, how can I help? Meet your Google Assistant. So as you can see, that's our early vision for how we want to build a Google Assistant. We're just getting started, but in many ways, we've been working hard at this problem ever since Google was founded 18 years ago. We have invested in deep areas of computer science. Today, our knowledge graph has over 70 billion facts about people, places, and things, and we can answer questions based on that. Our natural language processing is what helps us make Google truly conversational with our users. And we've built state-of-the-art machine translation, image recognition, and voice recognition systems. And each of these areas is being turbocharged by the progress we are seeing with machine learning and AI. A few months ago, we captured the world's attention when DeepMind's AlphaGo won the World Go Championship against Lei Sedol, one of the finest players of our generation. It showed the external world the moment for AI has arrived. But for us, the progress has been continuous and the strides are huge. In fact, in the 3 months since AlphaGo played that game, we have had meaningful launches and how machine learning is impacting the products we build. Let me talk about 3 examples, all of which we have talked about in the past 3 months since the AlphaGo moment. First, image captioning. Image captioning is how computers try to make sense of images they look at.
And we first launched our machine learning system in 2014. It was a state-of-the-art system, and our quality was around just over 89%. Our newer machine learning systems now, the quality is close to 94%. 4% may not sound like much to you, but first, it's really hard to increase quality at these levels because we are trying to approach human level accuracy. And second, every single percentage point translates into meaningful difference for our users. So for example, if you take a look at the picture behind me, about 2 years ago, we used to understand this picture as a train is sitting on the tracks. Now, we understand the colors, so we describe it as a blue and yellow train is traveling down the tracks. Or if you look at this picture, 2 years ago, we understood it as a brown bear is swimming in the water. तो ये आप देख रहे हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। इस वक्त सैन फ्रांसिस्को में गूगल का इवेंट चल रहा है, कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च होने हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान निखिल चावला टेक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी दिनेश भी मौजूद हैं। इस इवेंट से जुड़ा हुआ तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी की अगर बात करें दिनेश, तो एक चीज़ जो अनाउंस हुई है वो है गूगल असिस्टेंट। किस तरीके से अलग है ये और क्या खास है इसके अंदर? वैसे तो अभी अपडेट्स आ रहे हैं, लॉन्चिंग हो रही है, उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन इसके बारे में अगर आप बताएं तो। जी बिल्कुल ताबिश, हमने देखा है कि हर एक टेक्नोलॉजी जायंट कंपनी अपने नए नए पर्सनल असिस्टेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही ला चुकी हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो उन्होंने कोर्टाना ला चुके हैं, एप्पल का सीरी ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, तो गूगल भी अपना एक पर्सनल असिस्टेंट लाना चाहता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, और इसीलिए उन्होंने आज अपना गूगल असिस्टेंट को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। हालांकि ये इससे पहले आ चुका है, लेकिन अब इसको ऑफिशियली इन्होंने लॉन्च कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज होगी इस पूरे इवेंट पे देखने के लिए वो है पिक्सल और पिक्सल एक्सेल के लिए, और इसीलिए मैं निखिल से जानना चाहूंगा, निखिल क्या सोचते हैं आप? और हमने जैसे कि देखा है कि गूगल की एक कैंपेन शुरू हुई है मेड बाय गूगल, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस कैंपेन से और क्या होगा इस पिक्सल और पिक्सल एक्सेल फोन में? जी, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि गूगल अब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि मेड बाय गूगल ये हमने बनाया है, और ब्रांडिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो पहले उनका नेक्सस एक फॉर्मेट होता था जिसके अंदर वो करते थे कि एक कंपनी के साथ टाइप करते थे, एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर के साथ, और खुद ओएस बनाते थे और वो मर्जर को नेक्सस कहते थे। अब उन्होंने बिल्कुल वो नेक्सस लाइनअप खत्म करके एक पिक्सल लेके आए हैं जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि हम हार्डवेयर भी अपना बनाएंगे, सॉफ्टवेयर भी अपना बनाएंगे, और ये दोनों चीज़ें इसलिए वो बनाना चाहते हैं कि वो एप्पल की तरह सीमलेस आपको एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि लोग ये ना कहें कि मुझे अपडेट नहीं आए, मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं। तो वो हार्डवेयर का भी कंट्रोल चाहते हैं और सॉफ्टवेयर का भी कंट्रोल चाहते हैं। और वो नेक्सस का एक ये होता था कि अच्छा स्पेसिफिकेशन सस्ते प्राइस पे, लेकिन अब गूगल चाहता है कि उनकी डिवाइसेस को प्रीमियम माना जाए, तो उनको रीब्रांडिंग इसलिए करनी पड़ी है कि वो अब एक प्रीमियम प्राइस पे बेचेंगे और कम्पीट करेंगे वो फ्लैगशिप के साथ, जैसे कि एप्पल आईफोन 7 हो गया या सैमसंग गैलेक्सी S7 हो गया। लेकिन निखिल, सीधा कंपटीशन जैसे कि आप भी बता रहे हैं गूगल करना चाहता है एप्पल के साथ, और जैसे कि ये पहली चीज़ लॉन्च हुई है गूगल असिस्टेंट, एप्पल का सीरी हम देख चुके हैं पिछले कुछ वक्त में, काफ़ी फेमस भी रहा है। कंपटीशन कुछ ज़्यादा होगा एप्पल के साथ compete करने में, क्योंकि एप्पल की ब्रांड बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये एकदम नई चीज़ है गूगल की तरफ से इस ब्रांड के साथ जो गूगल आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला है कि ये एप्पल का सीरी बहुत टाइम से आ रहा है और गूगल असिस्टेंट एकदम अभी नया आया है और अभी उसको टाइम लगेगा। तो यही गूगल अभी जो सुंदर पिंचे ये बोल रहे थे कि हमने बहुत टाइम लगाया है मशीन लर्निंग और एआई के लिए। ये इसलिए कर रहे हैं, इतने टाइम से ये बैकग्राउंड में काम चल रहा था, ये नहीं कि इन्होंने लॉन्च नहीं किया, ये बहुत टाइम से बैकग्राउंड में काम चल रहा था। अभी आपको एक मोबाइल फ़ोन में आपको ये गूगल के होम हार्डवेयर में मिलेगा, जिससे आप बात कर सकते हैं असिस्टेंट से और आप उसको बोल सकते हैं लाइट ऑन ऑफ करे, मेरी गाड़ी आ रही है तो गैराज का डोर खोल दे और टेम्परेचर कम कर दे इसी का, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर पाएंगे इस हार्डवेयर से। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पीछे रह गए हैं एआई में, और ये अभी भी सीरी से कम्पीट कर पाएंगे। पीछे रह गए नहीं दिनेश, एक ऐसी भी चीज़ है कि ये बहुत नेसेसरी सी होती जा रही है। एप्पल की कंपटीशन में अगर आप जाएंगे तो ऐसी चीज़ें आपको लानी ही पड़ेंगी जो कल के ज़माने की चीज़ें कही जा रही है। कितना कारगर होगी ये जो फीचर है गूगल का खासतौर पर? जी तावेश, अभी आपने सुना होगा सुंदर पिचाई ने यही कहा है कि एआई अब आने वाले दौर का सबसे यही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, क्योंकि पहले वेब था, उसके बाद फोन्स आए हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही सारी टेक्नोलॉजी कंपनी, ना सिर्फ गूगल, इनफैक्ट सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज का फोकस रहेगा। और अब भाई आप बहुत जल्द इसी इवेंट में देखेंगे कि गूगल होम एक नया हार्डवेयर लेके आएंगे जो इसी के ऊपर बेस्ड होगा, तो तब आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी आपकी लाइफ को आसान बनाएगा।
जी ताबिश। जी, हार्डवेयर की बात हो रही है, जैसे कि निखिल भी बता रहे हैं, सब चीज़ें गूगल अपनी तरफ से लाने की कोशिश में कर रहा है। और अगर खास तौर पे फ़ोन की हम बात करें तो फ़ोन में क्या कुछ नया रहने वाला है? फ़ोन की अगर बात करें तो डिज़ाइन तो सबको वही लग रहा है जो आईफोन 6 का है, जो 2015 का डिज़ाइन है। इनफैक्ट वो ऐसा डिज़ाइन है कि वो अभी तक बहुत सारी कंपनीज कॉपी कर चुकी हैं, और पिक्सल का डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। जो फ़र्क हमें दिखा है कि वो बस एक दो टोन है कलर की, और स्पेक्स की बात करें तो स्पेक्स भी वही हैं जो आजकल सब फोन्स में आ रही हैं। जैसे कि आपको मिलेगी जो रैम है, जो 12 मेगापिक्सल कैमरा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश की जा रही है गूगल की तरफ से आईफोन को? ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल लग तो यही रहा है कि वो एक ब्रांड को अपना जो पोजीशनिंग कर रहे हैं कि जैसे कि एप्पल आईफोन का है, बिल्कुल हम वैसे ही डिज़ाइन निकालते हैं, मेटल यूनी बॉडी डिज़ाइन है, और हम उसी को वैसे ही पिच करेंगे हमारा कि ये बहुत ही यूनिक और क्या कहते हैं प्रीमियम डिवाइस है, और उसी टाइप की प्राइसिंग रखना चाह रहे हैं इंडिया में भी। प्राइसिंग भी एक काफ़ी अहम चीज़ होती है दिनेश, अगर आप नई चीज़ में लाते हैं खास तौर पर, क्योंकि हम सैमसंग की तरफ से देख चुके हैं, प्रीमियम ब्रांड सैमसंग भी लॉन्च कर चुका है, लेकिन एक प्राइस के मामले में जब बात आती है तो थोड़ा सा वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट जुटा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। सही कहा, और यही उम्मीद करते हैं हम गूगल से भी कि अपने रीब्रांडिंग ने ज़रूर कही है, नेक्सस को बंद करके अब ये पिक्सल और पिक्सल एक्सेल को ज़रूर ला रहे हैं, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इसका प्राइस आईफोन जितना महंगा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ समवेयर अराउंड 40,000 वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी। जी ताबिश। जी दिनेश, निखिल आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से चलते हैं इवेंट के अंदर, देखते हैं क्या कुछ और नया अपडेट आया है इस इवेंट। We often joke that building hardware is, well, hard. People have strong emotional connections to the products they rely on every day. They're an important part of our users' lives. But the rise of volume and complexity of all the information makes it so that this is the right time to be focused on hardware and software. Let's think about that for a moment. At the peak of film photography, 80 billion photos were captured every year. But last year, thanks to smartphones, 1 trillion photos were taken. Communications has gotten similarly complex. 328 billion items were delivered by the post office last year. And that's compared to 50 trillion emails and mobile messages. And today, people want more than 1,000 songs in their pocket. What they want is the entire world's music collection with them at all times. These informational changes mean that technology needs to be smart and just work for you. This is why we believe the next big innovation is going to take place at the intersection of hardware and software, with AI at the center. That's where we have the biggest opportunity to bring people the very best of Google as we intended it. Building hardware and software together lets us take full advantage of capabilities like the Google Assistant. It lets us harness years of expertise we've built up in machine learning and AI to deliver the simple, smart, and fast experiences that our users expect from us. And it allows Google to be helpful to people wherever they need us, no matter what the context or form factor. As you'll see today, we're building hardware with the Google Assistant at its core, so you can get things done without worrying about the underlying technology. Our devices just work for you, whether you're at home with family, commuting to work, out for a jog, or spending time with friends. This is something that Google has always stood for. Hardware isn't a new area for Google, but now we're taking steps to showcase the very best of Google across a family of devices designed and built by us. This is a natural step, and we're in it for the long run. You're going to hear much more from our team in the coming months and years to come, and we have lots in store for you today. So let's get started. First, with phones. Phones are the most important device we own. They rarely leave our side. They're literally most people's lifeline to the internet and to each other. So today, I'm very excited to introduce you to a new phone made by Google. We call it Pixel.
For those of you who followed Google for a while, that name might sound familiar to you. For us, it's always represented the best of hardware and software designed and built by Google. Let me tell you a little bit more about Pixel. We designed everything about Pixel, from the industrial design to the user experience. Everything is simple and easy to use, something Google has always stood for. I really love how this phone looks and feels. The rear glass creates a bold, iconic element that gives Pixel personality and character. The polished aluminum case gives the phone a distinct look. And there's a subtle wedge from the top to bottom that keeps it thin where your hand most naturally grips it. And there's no unsightly camera bump. And while Pixel's beautiful, what really makes it come to life is how the hardware and software work together. It's the perfect example of how the best of Google smarts combines to make a great, simple user experience. So today, we're going to tell you about 5 things. First, we're excited to announce that Pixel is the first phone with the Google Assistant built in. Second is Pixel's terrific photography experience. Third is how we use Google Cloud so you never run out of space for those great photos. Fourth is how we let people talk to each other much more easily, no matter what operating system or device they use. And finally is how Pixel is made for mobile virtual reality. To tell you more about Pixel, I'd like to invite my colleague, Brian, to the stage. Thank you. Hi, I'm Brian, and I lead the software product management team for Pixel. There have been so many people who worked so hard. I feel lucky to be the one to show you what we've built. So this phone was designed inside and out to be simple and smart. And I think you'll notice that right from the home screen. Let's switch to a demo. The first thing you'll see with the new Pixel launcher is round app icons, access to all of your apps, just a swipe away. दिनेश, फ़ोन तो लॉन्च हो गया है, डिज़ाइन भी हमने देखा, कुछ डिज़ाइन के बारे में बताया गया और साथ ही जो फीचर्स बताए गए, कुछ नया है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे अलग, या फिर वही चीज़ें हैं जो एक्सपेक्टेड थी गूगल से? ताबिश, मैं कहूँगा नया फ़ोन है, पहली बार गूगल ने इस फ़ोन को खुद बनाया है, तो कोशिश अच्छी रही है और कहीं ना कहीं मुझे लगेगा ये फ़ोन थोड़ा प्रॉमिसिंग भी ज़रूर है, लेकिन अभी स्पेसिफिकेशंस के मामले में ये थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है, क्योंकि इससे कम प्राइस पे ही और इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में आपको पता ही कितना टफ कॉम्पिटिशन है, जहाँ हर एक दिन हमें नए से नए फ़ोन देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। जी ताबिश। निखिल, छोटा सा जवाब आपसे, कितना प्रॉमिसिंग लगा आपको फ़ोन? इस फ़ोन की एडवांटेज यही है कि आपको सबसे पहले एंड्रॉइड के वर्जन मिलेंगे। इसमें सबसे पहले एंड्रॉइड 7.1 मिलेगा, जिसके अंदर VR मिलेगा इनबिल्ट, गूगल असिस्टेंट इनबिल्ट मिलेगा। तो बस एक ये USP है इसके पास कि आपको अपडेट्स पहले मिलेंगे और सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रहेगा आपके पास।